Assalamu alaikum students. Today we are going to start our new chapter, that is chapter number 5, reconstitution of partnership, death of partner. Okay, it's the third part of reconstitution of partnership. First one is admission, second one is retirement, and the third one is death. Okay, so we directly start from the question. Illustration number 1. Rekha, Menika, Mukta were partners in a business, sharing profit and losses in the ratio of 2:1:1 respectively. Their balance sheet as on 31st March 2019. First, liability side, capital account, Rekha 60,000, Menika 70,000, Mukta 34,000. Creditors 18,000, bills payable 2,000, general reserve 16,000. Come to asset side, plant and machinery 60,000, debtors 50,000, furniture 30,000, and bank 60,000. Now both side balance sheet total is 2 lakh, 2 lakh. Mukta died on 1st July 2019. कब मुक्ता डेथ हो रही है? 1st जुलाई 2019. मीन्स आफ्टर स्टार्टिंग ऑफ 3 मंथ. तब न्यू ईयर स्टार्ट हुआ, उसके 3 महीने बाद मुक्ता डाई हो रही है, मर रही है. ओके, द एडजस्टमेंट वेयर नंबर 1, प्लांट एंड मशीनरी वॉज टू बी रिवेल्ड to rupees 70,000 and RDD to be created of rupees 2,000. Second, the drawing of Mukta up to a date of her death amounted to rupees 10,000. Third, charge interest on drawing rupees 1,000. Fourth, her share of goodwill should be calculated at 3-year purchase of the profit for the last 4 years, which were first year 1,50,000, second year 1,30,000, third year 70,000, fourth year 50,000. Now students, now how we calculate the goodwill? Okay, so हमें पता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर जब हमने स्टार्ट किए थे, सो इसका जो फर्स्ट पार्ट है एडमिशन ऑफ पार्टनर, उसमें हमने गुडविल सॉल्व किए थे. गुडविल एज पर एवरेज प्रॉफिट, गुडविल एज पर सुपर प्रॉफिट. ओके, थ्रू दिस मेथड ही हमें इसके अंदर गुडविल को फाइंड आउट करना है. एंड फिफ्थ, द डिजीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ to be calculated on the basis of average profit of last 2 years, that is third and fourth. Prepare profit and loss adjustment account called revaluation account, partners capital account and balance sheet, and giving the working note of profit of goodwill. Okay, so listen students, ये बाकी दो के जैसा ही है. ओके, अब हम रिटायरमेंट में क्या करते थे? जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके पैसे हम पार्ट पेमेंट कैश में करते थे, बाकी का उसको लोन ट्रांसफ़र करते थे. सेम है जिसमें भी करना है, बस यहाँ पे हमें जो है डिजीज़ पार्टनर जो है, मतलब जो पार्टनर मर रहा है उसका एग्जीक्यूटर, जिसको हम बोलते हैं आम वर्डिंग में उसका लीगल हायर, ओके, उसके अकाउंट में हमें ट्रांसफ़र. क्लियर है? सेम एज रिटायरमेंट की जैसा ही है, ज़्यादा कोई चेंजेस इसमें नहीं है. बस हमें इसके अंदर गुडविल वगैरह जो है फाइंड आउट करना है, वो भी बहुत ईजी है. And at the end of the question I'll show you the working note of goodwill and profit. Okay, so now we are moving forward to the answer. First heading, in the book of partnership firm, revaluation account. Second is partners capital account, particular Rekha, Menka, Mukta, particular Rekha, Menka, Mukta. And third is balance sheet as on 1st July 2019, liabilities and asset. Okay, so हम as per the question solve करेंगे. तो first capital account Rekha, Menka and Mukta transfer to partners capital account credit side by balance brought down. Rekha 60,000, Menka 70,000, Mukta 34,000. Next, creditors transfer to balance sheet liability side, amount 18,000. Next, bills payable transfer to partners, transfer to balance sheet liability side, bills payable 2,000 rupees. Next, general reserve 16,000, and these 16,000 should be transferred
in partners capital account and distributed amongst the partner as per their profit sharing ratio. So we write partners capital account credit side by general reserve, and 16,000 should be distributed in the ratio of 2:1:1. 16,000 multiplied by 2 divided by 4. So Rekha column 8,000, Menka column 4,000, Mukta column 4,000. Okay. Now come to asset side, plant and machinery. That is an adjustment on plant and machinery. So we write in balance sheet asset side plant and machinery, inner column 60,000. Next debtors, that is an adjustment on debtor. So again we write in balance sheet asset side debtor, inner column 50,000. Next furniture 30,000, transfer to balance sheet asset side furniture, outer column 30,000. Next bank 60,000, transfer to balance sheet asset side bank, in bracket we write 60,000. Okay. Now comes to adjustment. Mukta died on 1st July 2019. Number 1, plant and machinery to be value rupees 70,000. इसमें स्टूडेंट्स प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी थी 60,000 थी, अब कितनी हुई 70,000. सो इट्स एन एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन. सो इट्स एन एप्रिसिएशन, ये हमारे लिए प्रॉफिट. तो बैलेंस शीट असेट साइड ऐड इन प्लांट एंड मशीनरी वी राइट ऐड एप्रिसिएशन, इनर कॉलम 10,000, आउटर कॉलम 60,000 प्लस 10,000 इज इक्वल टू 70,000. नेक्स्ट इफेक्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड, as it's a profit for business, so we write by plant and machinery account 10,000. Okay. And RDD to create 2,000 on debtor, और साथ में RDD भी डेटर्स पे 2,000 रुपीज़ क्रिएट करना है. इट्स एन एक्सपेंसेस और लॉसेस फॉर बिजनेस. सो फर्स्ट वी राइट ऑन बैलेंस शीट असेट साइड डेटर में से क्या करेंगे लेस RDD, इनर कॉलम 2,000, आउटर कॉलम 48,000. सेकेंड इफेक्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड टू RDD अकाउंट and outer column 2,000. Okay. Second, the drawing of Mukta up to the date of her death amounted to rupees 10,000. Mukta की drawing कितनी थी 10,000, and drawing is a personal expenses, so we write on partners capital account debit side to drawing on Mukta's column 10,000. Next, charge interest on drawing rupees 1,000. अभी क्या करना है, ड्राइंग पे इंटरेस्ट भी चार्ज करना है 10,000 रुपीज़, sorry 1,000 rupees. So again we write on partners capital account debit side to interest on drawing 1,000. Clear. Next, fourth, her share of goodwill should be calculated at 3-year purchase of profit for the last 4 years, which were 1,50,000, 1,30,000, 1,70,000 and 50,000. Okay. सो इसके थ्रू हमें क्या फाइंड आउट करना है, गुडविल फाइंड आउट करना है. सो लिसन स्टूडेंट्स, गुडविल आपको एट द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन शो किया हुआ मैंने थ्रू द वर्किंग नोट. So now I tell you the direct value of goodwill. So goodwill value is 3 lakhs and Mukta's share is 75,000. Okay, goodwill value कितनी टोटल 3 लाख रुपीज़, जिसके अंदर मुक्ता का शेयर कितना है 75,000. So we write on partners capital account credit side by goodwill on Mukta's column 75,000. Clear? Next, the deceased partner's share of profit up to date of death to be calculated on the basis of average profit of last 2 years. अब जो डिसीज पार्टनर उसका प्रॉफिट जो है हमें लास्ट एंड सेकेंड लास्ट ईयर के बेस को लेके कैलकुलेट करना है. बेस मीन्स देखो थर्ड ईयर का प्रॉफिट 70 दिया हुआ है, फोर्थ ईयर का प्रॉफिट 50,000 दिया हुआ है, उसके बेसिस पे हमें कैलकुलेट करना है. सो आई विल टेल यू द डायरेक्ट आंसर. द डायरेक्ट आंसर ऑफ मुक्ता शेयर ऑफ प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट इज 3,750. ओके, these 3,750 should be transferred to Mukta's profit and loss suspense account. Now why profit and loss suspense account? Because कोई भी पार्टनर मरता है, डिजीज होता है, तो उसका प्रॉफिट जो है थ्रू सस्पेंस उसे दिया जाता है. सो राइट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट ऑन Mukta's column 3,750. Okay, now the question is over.
Now we do a final total. So first we total of revaluation account. So revaluation account credit side total is 10,000 and credit side total is higher than the debit side total. So we write both side 10,000, 10,000. Out of 10,000 we deduct debit side total 2,000. So we left 8,000 and these 8,000 should be distributed among the partner as per the ratio, and the ratio is 2:1:1. So 8,000 multiplied by 2 divided by 4, that is 4,000 for Rekha, 2,000 for Menika and 2,000 for Mukta. This profit transfer to partners capital account credit side, we write by revaluation account, in bracket we write profit, Rekha column 4,000, Menika column 2,000 and Mukta's column 2,000. Okay, now first we do a total of Mukta's column. So Mukta's column credit side total is higher than the debit side total, and credit side total is 1,18,750. This total we write on both sides 1,18,750, 1,18,750. Out of 1,18,750 we deduct all the debit sides total, so we left 1,07,750. So we write to Mukta's executors loan account 1,07,750, and second effect balance sheet liability side write Mukta's representative either executors loan account 1,07,750. Now further we do a total of Rekha and Menka's account. So Rekha and Menka's credit side total is higher than the debit side total, and credit side total of Rekha is 72,000 and Menka's is 76,000. This total we write on debit side. So there is zero balance on debit side, so we write 2 balance carried down. On Rekha's column 72,000, on Menka's column 76,000. Now these balance transfer to balance sheet liability side, we write capital account underline Rekha 72,000, Menka 76,000. Okay, next there is only one adjustment is left, that is bank adjustment. Okay, so bank in bracket we write 60,000 minus 10,000 as drawing of Mukta. So outer column we write 50,000, and next profit and loss suspense account in bracket we write 3,750 less 1,000 is interest on drawing. So outer column on balance sheet asset side we write 2,750. Okay, and last goodwill amounting rupees 75,000 as we calculate through a working note. Okay, now all the adjustment has been done and all the posting have been done. Now we do a final total, and our balance sheet final total is 2,75,750, 2,75,750, and our balance sheet is 10. Okay, now I'll show you the working note of share of profit and calculation of goodwill. First we see the valuation of goodwill. Total profit of 4 years is 15,000 plus 1,30,000 plus 70 plus 50. So average profit is equal to total profit upon number of year. It's a formula. So average profit is equal to 4 lakh divided by 4. So 1 lakh is an average profit, and goodwill is equal to average profit multiplied by number of year purchase. So 1 lakh multiplied by 3. So कितना आएगा 3 lakh, and Mukta's share is 1%. So 3 lakh multiplied by 1 divided by 4, that is 75,000. क्लियर है, बहुत ही ईजी कैलकुलेशन है, हम इससे पहले भी कर चुके हैं. एंड नेक्स्ट कैलकुलेशन इज कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट. सो इसका ये क्या है, प्रॉफिट फॉर करंट ईयर. सो इसकी कंडीशन क्या है, एवरेज द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर. लास्ट 2 ईयर का एवरेज प्रॉफिट जो है वो इस करंट ईयर का प्रॉफिट होगा अप टू द डेट ऑफ डेथ. So 70,000 plus 50,000 divided by 2. So 1,20,000 divided by 2, that is 60,000. Okay. So 60,000 is the appropriate profit निकला है on the day of death of Mukta. So 60,000. मुक्ता कितने महीने जिंदा रही, 3.
फ्रॉम मार्च, अप्रैल, मई एंड जून, बिकॉज 1 जुलाई को मुक्ता की डेथ हो गई, सो 3 महीने, सो 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 12, सो अमाउंट इज 15,000. 3 महीने का प्रॉफिट कितना आया? टोटल 15,000. ओके, आउट ऑफ 15,000 आप उसमें मुक्ता का शेयर कितना है? दैट इज़ 1%. सो 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 4, सो अमाउंट इज 3,750. क्लियर है? थ्रू दिस वे वी हैव टू कैलकुलेट द शेयर ऑफ प्रॉफिट and valuation of goodwill. Okay students, thank you. Assalamu alaikum.